There is no dispute that in any manner the Election Commission of India has established its supremacy in the entire world by effectively conducting free and fair elections of the largest democracy in the world. As you know, many countries are seeking advice and suggestions to improve their electoral mechanism from the Election Commission of India, and as such, it is a matter of great pride for our country. The integrity of the Election Commission of India is impeccable. However, electoral reforms for strengthening our democratic fiber is need of the hour. This had always been a burning issue before the lawmakers, the jurists and the intelligentsia, and certain grey areas are still there regarding which a serious thought, deliberation and rational debate on these vital issues is required. Just now, the knowledgeable speakers who have preceded me have deliberated on these vital issues in depth and detail which admirable and call for no appreciation. However, I am alive to the fact that paucity of time, and therefore it would be difficult to discuss this issue in a structured manner. Yet, I would only venture to say that money power, which was insignificant in the early 60s, has now become repetitive in the recent years. Due to recent electoral reforms, there is an apparent degree of muscle power between invent and introduction of electronic voting machines by the Election Commission of India. In this way, by usage of this current day technology, booth capturing and disputes relating to counting of votes have decreased considerably. The Election Commission of India has no doubt succeeded in conducting fair and free elections by the deployment paramilitary forces, by identifying and declaring certain constituencies as sensitive or hypersensitive, and by spreading the election schedule to different dates. Yet, this remedy has no control over the illegal use of money power by contesting candidates and political parties. Unaccounted money is being used at large scale by contesting candidates during the course of elections to purchase the vote and thereby corrupting our moral and democratic values. The code of conduct is being violated without immunity. Hence, such violations have no serious consequences as compared to winning election. The Election Commission of India is in fact required to take immediate steps to propose a suitable amendment to Section 123 of the Representation People Act 1921 as well as the Model Code of Conduct. Recently, a sharp increase in the deployment of paramilitary forces as well as that of the observers have resulted in burdening of the state sector, and thus educate measures are required to be adopted to decrease the deployment of paramilitary forces so that the state exchequer is less burdened. Observers who are being nominated by the Election Commission of India have not given effective powers to check the violation of rules, regulations, or instructions issued by the Election Commission from time to time at that spot. Therefore, one should not mince words to state that these observers can be called toothless tigers instead of being effective watchdogs of our electoral process and democratic fiber. It is high time that the government and the Election Commission of India may seriously consider debarring such contesting candidates who are found guilty of repeatedly violating the Model Code of Conduct and other statutory provisions of Act during the course of election process. As per the recent trends, most of the political parties have preferred to give tickets to such candidates who possess the qualification of purchasing votes, so that he or she would spend much more money in the election than the prescribed limit by the Election Commission of India. Although the Election Commission has amended Section 77 of the Act and has also appointed observers to check the counts of the contesting candidates on day-to-day basis. But such accounts are easily fudged, and the use of money beyond stipulated limits has not
checking of the counts by the observers on the day-to-day basis could not be considered to be sufficient to control the money power used by the contesting candidate, and thus it requires suitable amendment in Section 77 of the Act. The Election Commission of India has consistently endeavored to issue relevant instructions from time to time to the returning officers and the contesting candidates. This has become so voluminous that thus making it difficult to follow in letter and spirit. Therefore, in all humility, I wish to conclude by saying that urgent and effective steps are required to be taken to come out with a concise and precise codified code of conduct as well as instructions for both the returning candidate, returning officer as well as the contesting candidate. Thank you very much. Thank you, Prasad. Take his point in 2 minutes. You can, if you want here or there, both way it is. Yes, I. And the next speaker will be Mr. Charanlal Sahu, Advocate Supreme Court. Next. May I speak in Hindi? Yes, yes. नमस्कार। आदरणीय इलेक्शन कमीशन महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय श्री अग्रवाल साहब, हुडा साहब और सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, बहुत देर से मैं भाषण सुन रहा हूं। यहाँ तरह तरह के विचार आ रहे हैं। 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक, हम आते हैं, इंग्लिश में भाषण सुने, चले गए। हम लोगों का काम भी यही है। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, सुझाव भी देना चाहूंगा। हमें सोसाइटी ऑफ द क्रीम एडवोकेट्स को कहा जाता है, और आज सोसाइटी में जिस तरीके से हमारे कैरेक्टर का, राजनीति का, देश का गिरावट हर फील्ड में हो रही है, उसको रोकने का काम भी हम लोग करें। इलेक्शन कमीशन महोदय बैठे हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि इस देश का इलेक्शन फेयर हो। जो कैंडिडेट नॉमिनेशन अपना फाइल करते हैं, उनसे एक एफिडेविट ले जाता है उनकी प्रॉपर्टी के संबंध में कि आज आपकी क्या संपत्ति है। जो एफिडेविट्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, किसी पॉलिटिशियन का हमारे काल में सारे बेकार हैं। महरौली में 2.5 एकड़ का फार्म एफिडेविट दिया जाता है, जैसा हमने अखबारों में पढ़ा, 8 लाख रुपए। क्या एक जमीन आ सकती है 8 लाख की? वहां क्या मायने हैं इस एफिडेविट के जो हम ले रहे हैं? जो आदमी सड़क पर चारपाई बिछा करके सोते थे, 4 महीने के अंदर अंदर वो 1-1 और 2-2 करोड़ के मकानों में सोते हैं। क्या हम देखते नहीं उनको? हम देख रहे हैं उनको। पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाती है कि जजों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि आज अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जिंदा है तो केवल इस जुडिशियल सिस्टम की वजह से है, और इस जुडिशियल सिस्टम को भी ये पॉलिटिशियंस खत्म करने को उतारू है। जजेस अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं, किसके सामने करेंगे? जिसका 2.5 एकड़ का फार्म 8 लाख का है, उनके सामने करेंगे। इस पर विचार करें इलेक्शन कमीशन महोदय। 1990 से पहले राजनीति में कोई गिरावट नहीं थी। कोई पॉलिटिशियंस अपने परिवार के बच्चे को, लड़के को, भाई को, बहू को राजनीति में नहीं लाता था, बल्कि वो पढ़ाते थे। दाएं बाएं से उनके एडमिशन कराए जाते थे मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। लेकिन आज क्या हो रहा है? बच्चा नाबालिग उम्र बढ़वा करके इलेक्शन लड़ा जाता है। क्यों? 1993 में ये निधियां आई, पार्लियामेंट सांसद निधि और विधायक निधि। इससे बड़ा व्यापार कोई नहीं रहा। न जरूरत पढ़ने की रही, न लिखने की रही।
अगर हम कुछ कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी सही मायने में चले और इस देश में ईमानदारी से पॉलिटिशियन अपना काम करें, तो हमको आवाज उठानी चाहिए कि ये बंद हो। जब से ये निधियां आई हैं तब से ही राजनीति का व्यापारीकरण हो गया। हम लोग प्रस्ताव करें, अगर आप स्वच्छ चाहते हैं, आज आम आदमी चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है, इलेक्शन कमीशन साहब मौजूद हैं। आप 1 लाख रुपए महीना कमा करके भी उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जो 10 साल कुर्सी पर लेकर के 5 साल कुर्सी पर रह करके और 5 साल की निधियां खा चुके हो। आप उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। जब से निधियां आई है तब से हर पॉलिटिकल पार्टी ने खिड़की खोल दी है, टिकट बंटते हैं। एक परिवार 5 जगह चुनाव लड़ता है, 5 टिकट खरीद लेता है जो उसमें कैपेसिटी है। आप अपने खून पसीने की कमाई से आज यहां आए हैं, बैठे हैं, आप मुकाबला उन लोगों का नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा दायित्व है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अग्रवाल साहब से प्रार्थना करूंगा, चाहे रिट फाइल करनी पड़े, कि जब तक ये निधियां खत्म नहीं होगी, बुराई की जड़ आतंकवाद जो आज का विषय है, इंटरनेशनल टेररिज्म, ये भी इसकी तह में है। कैसे कैसे लोग आज पार्लियामेंट में आते हैं जो शपथ नहीं ले सकते, जो पढ़ नहीं सकते। बिल्कुल सही। 265 लोग आज 265 लोग पार्लियामेंट में अपराधी बैठे हुए हैं। अरे इलेक्शन कमिश्नर के पास उतनी ताकत है जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल इलेक्शन कमीशन के भरोसे में आप इस सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकते। इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये 2-3 मेरे विचार थे, बैठा जो मैं सुन रहा था, मैंने आपसे कह दिया और मैं प्रार्थना करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल होनी चाहिए कि खत्म हो, जिससे कि अच्छे आदमी, भले आदमी राजनीति में आ सके। कि तो आप ये देखिए कि अगले चुनाव में जितने 542 एमपीज हैं, देखिए हमारे राष्ट्रपति जी माफ करें, उन्होंने अपने लड़कियों को एमएलए बनवा दिया। आपका सुझाव क्या है? व्हाट इज योर रेमेडी, व्हाट इज योर सजेशन? माय सजेशन बताइए। माय सजेशन इज कि इसके पीछे जो है, ये जो पॉलिटिशियंस ने ये पैदा की हुई है, ये निधियां जो है 5-5 और 10-10 और 20-20 करोड़ की, ये समाप्त होनी चाहिए। 93 से पहले आप गिन लीजिए कितने स्कैंडल हुए हिंदुस्तान में, उंगलियों पे हैं। और जब से ये निधियां फंड्स आए हैं तब से रोजाना स्कैंडल का पड़ते नया। बोफर्स का स्कैंडल केवल 67 लाख का था और कोड़ा का 1 साल का 4 करोड़ 5 करोड़। कुछ नहीं है। तो आप, मेरा प्रार्थना ये है कि आप इस पे विचार करें कि किस तरीके से हम वकील होने के नाते इससे लड़ाई लड़ें, जिससे कि पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट रहे। वहां पार्लियामेंट में आज अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। पार्लियामेंट, जवाहरलाल नेहरू जी हुए, बड़े बड़े हमारे नेता हुए, एक भी गिनती पर आदमी नहीं था कि जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो। सारे एमपी का इलेक्शन कमीशन जो है एफिडेविट लेता है, साहब मेरे खिलाफ तो मुकदमा नहीं। चुनने के बाद हम पढ़ते हैं कि 265 एमपी थे जो क्रिमिनल, इसीलिए खड़ा होगा। थैंक यू वेरी They have some idea, it's a form of suggestion. Yes, It should be welcome. Yes, it is welcome. Dr. Qureshi, I have some suggestions so far as the law of election is concerned. Under Article 323, all elections should be free and fair. But it is not so in reality. We have adopted a parliamentary form of government